Hi everyone, I welcome you all to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to analyze the Hindu newspaper, and it is for 28th July 2020. Let's start with the class. Class शुरू करते हैं. Now, when we talk about the analysis of newspaper, we all know that newspaper reading is very important for your prelims exam as well as for mains. In the entire newspaper, the editorial section is very important for mains and the rest of the sections are important for prelims. पूरे न्यूज़पेपर में बाकी सारे पेजेस तो prelims के लिए important हैं, but जो editorial section होता है वो सिर्फ mains के लिए important होता है, right? So you have to prepare it as well. आप उसको छोड़ नहीं सकते, right? So usually I do not analyze the editorials because that is for your own self analysis. But today I am going to analyze some important topics from the editorial also. Alright. And the class notes will be available on my Telegram channel. I am also taking live classes on Unacademy Plus. You can use code Sharma20 to get 10% discount. Now the first important editorial is an opportunity to reshape healthcare. Now because of this pandemic, we have understood that our health infrastructure is not very robust. इस पैंडेमिक के वजह से ही हमें समझ आया है ना कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. देयर आर मेनी लूप होल्स इन आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी हैव अंडरस्टूड दैट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक ओनली. So COVID-19 pandemic may have unwittingly led to some desirable changes as well. The COVID-19 pandemic has massively disrupted our lives. We all agree with that. Besides direct devastation of health, the epidemic and the lockdown have had myriad indirect effects, be it on environment, livelihoods, or supply chains. Supply chains had been initially worstly affected. Environment, however, improved. Livelihoods, you can say there were both positive and negative aspects of the livelihood changes during this pandemic and during the lockdown as well. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पैंडेमिक की, तो ये जो पैंडेमिक है, ये जो एपिडेमिक आया है, ये जो लॉकडाउन लगा था, दोनों का ही एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड्स, हमारे जीवन शैली पर और सप्लाई चेन्स पर असर पड़ा है. भले ही सप्लाई चेन्स लॉकडाउन के कारण बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं, लाइवलीहुड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेंजेस देखने को मिले, जॉब वाइज भी नेगेटिव चेंजेस देखने को मिले, पर पॉजिटिव भी थे. डिजिटल हो गया सब, एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो वेंट डिजिटल. But there were negative sectors also. What about those who cannot afford laptops? And environment में तो positive healing हुई ही है, right? We have seen the positive healings in the environment as well, right? इतनी बात सबको समझ आ गई. So there has been a lot of discussion around the lack of capacity of our healthcare system to fight this epidemic. इस महामारी से लड़ने के लिए हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इनिशियली हमने देखा था कि बेड्स की प्रॉब्लम थी, स्टाफ की प्रॉब्लम थी, नर्सेस की प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ नर्सेस, लैक ऑफ नर्सिंग स्टाफ, लैक ऑफ डॉक्टर्स, लैक ऑफ बेड्स, राइट, to accommodate the patients. So all these problems were highlighted in the first month of the lockdown. Lockdown के पहले महीने में ही ये सारी problems निकल कर आ गई थी. So we understood that there is a need to develop our health infrastructure. हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू एनालाइज दिस एडिटोरियल फॉर ऑल ऑफ यू. सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी. आपको सीखना है इस क्लास में कि एडिटोरियल को एनालाइज कर सकते कैसे करते हैं. सो दिस आई हैव जस्ट एक्सप्लेन राइट नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ. मैंने आपको बस पहला पैराग्राफ ही अभी तक समझाया है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज द एडिटोरियल. ओके, बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आस्क दिस डाउट हाउ टू एनालाइज इट. सो हियर वी गो. But the impact of COVID-19 and lockdown on the business of healthcare has not been examined. Business of healthcare. There are two things. दो चीजें होती हैं. पहला तो होता है आपका healthcare. And second is business of healthcare. जो hospitals, drug manufacturers, जो पैसा बनाते हैं healthcare sector से, वो हो जाएगा business of healthcare. All the hospitals, the drug manufacturers, right? Vaccine manufacturers, medicine manufacturers, pharmaceuticals, etc. Right? The chemist, etc. This will come under the business of healthcare. How business of healthcare has been affected during the lockdown
राइट, दैट वी हैव नॉट एग्जामिन्ड। अभी तक हमने ये चीज तो एग्जामिन ही नहीं करी। हमने ये एग्जामिन कर लिया कि कैसे हेल्थ सिस्टम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं, बट हेल्थ केयर का जो बिजनेस चल रहा है उस पर क्या असर पड़ा है ये हमने एग्जामिन नहीं किया। एंड दिस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट bearing on the larger arena of healthcare for our citizens in the coming future. So when we talk about Indian healthcare, जब हम Indian healthcare की बात करते हैं, it has been increasingly privatized, right? Private hospitals आप देखोगे हर जगह है, mostly it is everywhere now, the private hospitals, right? So our healthcare, Indian healthcare has been privatized, mostly increasingly it is getting privatized in the last few decades. And this has intensed the market competition. देखो प्राइवेटाइजेशन जहां आने लगती है कंपटीशन बढ़ना लगता है, प्राइवेट प्लेयर्स जहां आने लगते हैं टेक ओवर करने लगते हैं, आपस में कंपटीशन बढ़ाते हैं, राइट? So a uniquely unregulated form of healthcare has thrived. Unregulated why? Because it is privatized. Government का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस की मोनोपोली है, तो इसके वजह से हेल्थ केयर काफी हद तक अनरेगुलेटेड रह चुका हो गया है। दैट इज वाई द प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे आर चार्जिंग सच हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दी पेशेंट्स। पेशेंट से कितना एक दिन का आईसीयू का खर्चा हो, आप देखोगे अगर 60,000 प्लस होता है एक मीडियोकर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो जस्ट इमेजिन कि बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना होता होगा। एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट, आई हैव ऑल्सो सीन एंड एक्सपीरियंस्ड दैट अ कोविड-19 पेशेंट, कोविड का जो पेशेंट है, एक दिन का स्टे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1 लाख रुपए है एक बेड का, राइट? एक दिन का आप सोचो, राइट? जस्ट इमेजिन इन दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट in during the COVID-19 pandemic, even the normal regular patients, if they are being admitted into the ICU or if they are being admitted into the wards, right? If they are a liver patient or they are heart patients, then for the normal patients also the cost of bed has increased. It is 80,000 per day, it is 60,000 per day, right? So this is, you can say, very unregulated, highly unregulated, बहुत ज़्यादा unregulated है। किस बिना पर ये लोग इतना चार्ज करते हैं समझ नहीं आता। एंड द सर्विसेज विच आर गिवन आर mediocre. Most of the mediocre private hospital services are also mediocre, but the charges are high. So just imagine what will happen if the patient is admitted into a reputed big private hospital. So it has also been marked by several questionable practices. These have been under the media and public glare, leading to huge trust deficit. ट्रस्ट की भी कमी हो गई है इसी कारण, इसी कंपटीशन और इसी अनरेगुलरिटी के कारण, राइट? COVID-19 has led to a dramatic reduction in the number of patients seeking care. Why? Because उनको लगता है हम सेल्फ क्वारंटाइन ही कर लेते हैं, उतना काफी है, राइट? कौन हॉस्पिटल में जाकर लेटे, वहां पर हमारी कोई ज्यादा अच्छे से केयर नहीं होने वाली है, बस पैसे के पैसे ठगने वाले हैं वो लोग, तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को घर में ही रखें, सेल्फ क्वारंटाइन कर ले। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ प्लान्ड नॉन अर्जेंट प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज, एंड नॉट जस्ट द COVID-19 पेशेंट्स, द नॉर्मल पेशेंट्स ऑल्सो, they are also you can say not ready to go to the hospital or to get themselves admitted to the hospital. They are avoiding their surgeries, they are postponing their procedures and surgeries. Why? Because right now the business of healthcare, it is exploiting, write it down, it is exploiting the patients. इस वक्त जो बिजनेस है हेल्थ केयर का, जो मनी माइंडेडनेस है वो बढ़ गई है, और इससे क्या हो रहा है, पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। While this has caused collateral damage, with the condition of some patients worsening or taking an unfortunate turn, there may indeed be those who have avoided interventions without any deleterious impact. Right? Now, the incidence of cesarean sections is reported to have gone down. Similarly, procedures like coronary stents, knee replacements, or cosmetic surgery, which reflect supplier-induced demand, have also stopped because of the business of healthcare. Right? And also जो रूटीन एडमिशन हुआ करते थे ना इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए, मॉनिटर करने के लिए पेशेंट की कंडीशन को, वो भी अब लोग उससे भी बच रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, राइट? Strangely, even emergency medical cases have declined. Why? Because patients are not ready to visit the hospital because of the business. जो मनी माइंडेडनेस इस COVID-19 पैंडेमिक में बढ़ गया है ना, जो अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस हेल्थ केयर में बढ़ गया है, उसके कारण लोग इमरजेंसी मेडिकल केसेस में भी नहीं अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन,
There have been decrease in the cases of heart attacks or strokes presenting to the hospital. ये बात नहीं है कि इंडिया में केसेस कम हो गए हैं, नहीं, हॉस्पिटल्स में जो केसेस आते थे वो कम हो गए हैं, यानी कि ऐसे केस में भी लोग हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं कर रहे हैं. Cut practice with doctors and hospitals prescribing tests, right, drugs, referrals and procedures in return for commissions. It is entrenched in India, deep rooted in India. This leads to significant negative consequences, be it increased patient expense, patients not reaching the right doctor or not getting the appropriate investigation, and also an erosion in the doctor-patient relationship and the image of fraternity. I will give you my own personal example which we have experienced in the last few weeks. Last 2 हफ्ते में हमने ये experience किया है. I'll just the money mindedness of the private hospitals, right? So there is a hospital, I cannot name it, right? And a closed one was admitted to that hospital for a liver issue, right? And the doctor, even without knowing the history of the patient, even without knowing the symptoms of the patient, the pains that the patient is going through, he just said, Paytm me 17,000 rupees urgently, only then we will start the procedure, right? Either Paytm it, because वहां पर वो code लगा हुआ था, QR code, or just deposit the money into the hospital's bank account, right? And just deposit 17,000 rupees without even knowing the problem which he was experiencing, without even listening to the patient's relatives. We were the patient's relatives, they did not listen to us, right? And the doctor himself was standing there, the doctor, the major head of the department, HOD जो होता है ना, right, liver specialist and HOD, he was standing there and he said very urgently, he was in a hurry, बहुत ज़्यादा hurry में थे, and he just was trying to shut us up, and he was just again and again repeating, first deposit 17,000, only then we will look into it, right? Now at that time we were so desperate to seek help from the doctor because the patient's condition was deteriorating every second. He had lost consciousness and he asked us to deposit the same. We deposited it, and even after getting it deposited, when the reports came, he did not explain the reports perfectly, right? We were very unsatisfied with the treatment and the doctor's behavior as well. So we had to change our doctor. And during this lockdown, how tough it is to change doctor. इस lockdown के दौरान कितना ज़्यादा tough है doctors change करना. And the next hospital which we went, right, at that time the patient had lost his consciousness. He had fainted and he was experiencing seizures, fits. And we admitted him, and the hospital seriously, right on, bang on, it demanded submit 60,000, only then steps will be taken further ahead. And it was a very reputed hospital, right? So these are the problems which we have personally experienced, right? So this is the problem of the unregulated nature of the private hospitals. देखो private hospitals regulated नहीं है तो हम पूछ भी नहीं सकते क्यों इतने पैसे मांग रहे हो, issue क्या है patient को, right? हमें पहले समझाओ, हम घबरा रहे हैं, but नहीं, क्योंकि अनरेगुलेटेडनेस है ना हॉस्पिटल्स में, तो इस वजह से पेशेंट की ये दुर्गति होती है. सो आफ्टर 2 weeks finally the patient has recovered and he is coming back. So this is the issue which we are facing as the citizens of the country in these private hospitals, and this is based on the personal experience, right? इतनी बात समझ आ गई? Now the next important editorial is modern tools, age old wisdom. Now here this is important for GS paper 2 IR. We are going to talk about India's and Sri Lanka's relationship. हम India Sri Lanka के relationship की बात करेंगे इधर. Now in this particular news editorial, history reveals that advent, that is coming of Buddhism to Sri Lanka because of Ashoka. Ashoka के कारण Buddhism जो है Sri Lanka तक पहुंचा. During the time of Emperor Ashoka, it was the result of cross-border discourse. So since then, उससे भी पहले वैसे तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सिंस रामायणा वी हैव लिंक्स विद श्रीलंका. रामायणा के टाइम से हमारा लिंक है श्रीलंका के साथ. बट अगर हम आगे भी देखें, इन द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री आल्सो वी हैव लिंक्स बिकॉज ऑफ अशोका. देयर इज वन कॉमन थ्रेड विच इज कीपिंग अस टुगेदर, दैट इज बुद्धिज्म, दैट इज आवर माइथोलॉजिकल स्टोरीज, राम, रावणा, माँ सीता, right? For many centuries in the first millennia, the ancient capital city of Anuradhapura, which housed an international community which included traders from India, China, Rome, Arabia, Persia. Later, Buddhist monks came from Sri Lanka. They traveled to India, they traveled to China, Cambodia, and Java.
राइट, एंड दे ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या होता है, जैसे कॉपर प्लेट्स हो गए, उसमें बुद्धा की टीचिंग्स लिखी हुई हैं. तो ऐसे प्लेट्स, ऐसे पिलर्स हम इंडिया में, चाइना में, कंबोडिया में हमें देखने को मिलते हैं. बुद्धिस्ट टेम्पल्स इन श्रीलंका to this day contains shrines for Hindu deities also. And the colonial expansion of European maritime nations reshaped the Sri Lankan economy as well. Plus, we all know during the modern Indian history also we had relations with Sri Lanka. यहाँ पर basically India Sri Lanka के relation की बात की गई है कि historical relation है हमारा. You all know ना that China is trying to influence Sri Lanka. चाइना क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के चलते इंडियन ओशन को कैप्चर करने के लिए श्रीलंका को मैनिपुलेट कर रहा है. चाइना इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट श्रीलंका जस्ट टू कैप्चर द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन ओशन एंड टू सराउंड इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स. सो over here India and Sri Lanka's relationship, if they are robust, then the China's actions, China's manipulation will not work. अगर भारत और हम श्रीलंका के रिलेशंस की हिस्ट्री के बेस पर हम दोनों के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाए तो क्या होगा, इससे जो चाइना है उसके वो अपने काम में, अपने एक्शंस में विफल हो जाएगा. राइट, जो वो करने की कोशिश कर रहा है. राइट, सो labor from South India was brought to Sri Lanka to work in plantation. So in modern Indian history also we have links with Sri Lanka. Plus Indian freedom struggle, it had its influence on Sri Lanka also, right? And we all know that Sri Lanka has a very strategic location because it is in Indian Ocean. Indian Ocean point of contention है between China and India, right? It is a very crucial strategic point, right? And Sri Lanka is located, it is surrounded by Indian Ocean only, Gulf of Mannar, Strait of Jaffna. Over here you can see Park Strait जो आप देखोगे, right? Park Strait, Gulf of Mannar, these areas, these are very strategic. So if we build us, a very strong, robust relation with your China, sorry, with Sri Lanka, right? जब हम अगर श्रीलंका के साथ हम अपने relations को और strong कर लें तो इससे होगा क्या कि आगे जाकर कोई भी कंट्री अगर इंडिया को घेरने की कोशिश करेगी तो उसमें श्रीलंका हमारे साइड पे होगा. पॉसिबल नहीं होगा कि कोई और कंट्री हमें हर तरफ से घेरने की कोशिश करे. राइट, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जब हम स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करते हैं ना, तो बेसिकली इट ऑल्सो बेनिफिट्स इंडियाज इकोनॉमी. राइट, प्लस थ्रू रोबस्ट पार्टनरशिप, इफ इंडिया एंड श्रीलंका आर पार्टनरशिप बिकम स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ दैट our navigation will also become strong. There will be freedom of navigation. मान लो श्रीलंका के साथ हमारे relations अच्छे नहीं रहते तो क्या होगा, इस रीजन में, इंडियन ओशन के इस रीजन में नेविगेशन में दिक्कत आएगी. राइट, और यहाँ चाइना फायदा उठा सकता है. Here China can take advantage. Right, so this was the editorial. To sum up, both countries must seek to harmonize strategic and other interests in line with common values and socio-economic compulsions. So now let us solve one question. एक question solve कर लेते हैं, ठीक है. Consider the following statements. The PPP model of Common Service Center scheme envisages a two-tier structure. CSC project is one of the approved projects under integrated mission mode projects of National E-Governance Plan. Which statement is correct? कौन सा statement correct है? You have 5 seconds time to answer this question. 5 seconds का time है. Correct answer is, it is B. That is, statement 2 is correct. The PPP model of Common Service Center envisages a two-tier structure. That is wrong. ये गलत है. ठीक है? Clear everyone? It is a three-tier structure. Not two-tier structure, because it has a CSC operator. इसमें एक CSC operator होता है, which is known as village level entrepreneur. Then comes the service center agency. फिर आते हैं आपके service center agency, right? That will be responsible for the division of 500 to 1000 CSCs. And then comes the state designated agency. फिर आता है आपका third state designated agency, which is identified the state government, which monitors or manages or implementation the program in the whole of the state. So this is the three-tier structure. All right. Now next question, the task force headed by Atanu Chakraborty, sometimes mentioned in news, it was formed to enable COVID-19 related research and vaccine development.
set up to oversee interstate coordination, monitoring and resolution of issues relating to migrant workers. An interagency task force has been set up to provide support to foreign workers and dormitory operator to identify infra-sector projects for rupees 100 lakh crore investment. Which statement is correct? Again, you have 5 seconds time to answer. The correct answer to this question is, it is D, to identify infra projects for rupees 100 lakh crore investment. That is the purpose of the task force, which is headed by Atanu Chakrabarti. It is on National Infrastructure Pipeline. Feb 2020 में इसके ऊपर major news आई थी ना, so you have to study that. Okay. So this was all for today. I hope you enjoyed today's class. आज की क्लास में जो बहुत crucial चीजें थी वो हमने डिस्कस की हैं. If you really enjoyed it, then do not forget to like the video, share it with other aspirants and subscribe to my channel. Thank you.